Hello and welcome to start with the John Milton MCQs, which I covered yesterday. So, from 37, question number 36, sorry, some important exam point, which is very important for the Milton, Milton के जो questions आते हैं सभी एग्जाम्स में, उसके कुछ एग्जाम पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. द फर्स्ट इज Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou hadst a voice whose sound was like a star. Who said and where? William Wordsworth in sonnet on Milton. On Milton is a name of poem. ठीक है, वुडवर्थ ने लिखा है अपनी सोनेट में. ठीक है, सोनेट का नाम क्या है? ऑन मिल्टन. Yet they had the lowliest duties on herself did lay. The lines are about Milton. Who said this? Woodworth in sonnet on Milton. मतलब आपको ये ध्यान देना है कि किसने पूछा है, क्वेश्चन किस तरह से, क्योंकि पिछली बार टीजीटी में आया था क्वेश्चन, तो बहुत ही मतलब घुमा के पूछा जाता है. देखो क्या है यहाँ पे, फिर से एक बार समझ लो. लिखा है Thy soul was like a star, मतलब जो उनकी आत्मा है वो स्टार के समान है. एंड ड्वेल्थ अपार्ट द हेडेस्ट वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक ए सी, और जो साउंड है उनका वो एक समुद्र के समान है. तो ये कहा किसने है? हु सेड एंड वेयर, किसने कहा है और कहाँ कहा है? तो ये वुडवर्थ ने कहा है अपने सोनेट में. जो सोनेट है उनका नाम ऑन मिल्टन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आता है. ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है. दूसरा कह रहा है येट दे हर्ट द लोवेस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले. द लाइन इज अबाउट मिल्टन. ये लाइन कही गई है अबाउट मिल्टन, मिल्टन के बारे में. तो कहाँ से? हु सेड एंड वेयर, किसने कहा और कहाँ कहा? तो वुडवर्थ ने कहा इन सोनेट ऑन मिल्टन. क्लियर हो गई बात. नेक्स्ट देखेंगे. Shakespeare is a poet of impulse of the loves, hates, fears, jealousies and ambitions that swayed the man of his age. Milton is a poet of steadfast will and purpose, who moves like a god amid the fear and hopes and changing impulse of the world, regarding them as trivial and momentary things that can never swear a great soul from its courage. Who comment in this? लॉन्ग ने कहा है, लॉन्ग. ठीक है, WG लॉन्ग इनका नाम पूरा शायद है. फिर नेक्स्ट है ही मतलब ए पोएट ought to himself to be a true poem that is a composition and pattern of the best and most honorable thing. Who said? Milton. Before one can write literature, which is the expression of the ideal, he must first develop in himself the ideal man, the lofty ideal of Fra Angolico. Who said? Milton. Because Milton human, he must know the best in humanity. Who's commented this? Long. The Spirit of Lord is upon me. The Spirit of Lord is upon me. Whose line is this? Milton. The Spirit of Lord is upon me. Whose line is this? Milton. His style was unconsciously sublime because he lived and through unconsciously in the sublime atmosphere. Whose comment is this? Long about मिल्टन. देखो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, लॉन्ग ने कहा मिल्टन के बारे में. तो दीज आर द वेरी टिपिकल क्वेश्चन. इफ योर माइंड इज नॉट ऑन द सेम प्लेस तो इट्स हैविंग अ प्रॉब्लम. जैसे फिर से देखेंगे हम. हिज स्टाइल वॉज अनकॉन्शियसली सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड एंड थ्रू कॉन्शियसली इन ए सबलाइम एटमॉस्फेयर. हुज कमेंट इज दिस? ये कमेंट किसने कहा? ये लॉन्ग ने कहा है. किसके बारे में? अबाउट मिल्टन. The ode on the morning of Christ's nativity was begun in Christmas Day, 1629. Who was Milton Masters? Spencer. Who wrote essay on Milton? मैक्यूले ने essay लिखा मिल्टन के ऊपर. मैक्यूले
मैक्यूले। मिल्टन इज कॉल्ड लेडी ऑफ लाइट। मिल्टन को लेडी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। द एज ऑफ मिल्टन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पुलपिट। द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पुलपिट क्या क्या बोला जाता है। सो अब ये जो कुछ एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन थे उसके आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, 35 तक कल हो गया था आपका। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इवोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ कोर्स, बुक 7। मतलब इन द सेंस कह सकते हैं मिल्टन इवोक यूरेनिया इन बुक 1 एंड 4 बुक। पहली और चौथी बुक में क्या था, हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगनिंग ऑफ कोर्स, पहली और चौथी बुक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। एलिजी कौन सी है मिल्टन की, लिसिडस है। ठीक है, कब लिखी गई, 1638 में, मतलब रिटन इन 37 एंड पोस्टोरल एलिजी है ये। लिसिडस आपकी पोस्टोरल एलिजी है एंड इट अपीयर इन 1638, एक साल बाद। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वॉज ओवरकम विद फीमेल चार्म एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट हिज बेटर नॉलेज। तो ये पैराडाइज लॉस्ट है, ठीक है, BK 9 है। एंड एडम वॉज ओवरकम विद फीमेल चार्म टू ईट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट द बेटर नॉलेज, सो दैट ग्लोरी नेवर हिज ब्रेथ और माइट exhort for me. Paradise Lost Book 1. Which glory is began refers to by Satan. The courage never to submit or yield. जो courage है वो कभी submit नहीं होता और ना ही उसकी कोई सहायता कर सकता है। In the above line for the Milton Paradise Lost, Satan is referring to the courage never to submit or yield. Which of the following statement is not true of Areopagitica? It pleads for British privilege regarding free trade. It pleads for British privilege regarding free trade. Areopagitica is a speech of Mr. John Milton for the liberty of the unlicensed printing to the Parliament of England by Milton was published in 1644. Through it, Milton argues for the liberty of unlicensing printing address the parliament, hence option C. Okay, अब some more important point for which is important for the exam point of view. So Milton was also influenced by Fletcher, Christ, Victory and Triumph. As ever in my great task master I, this line is of Milton, who composed on the beginning arrived at the age of 23. As ever is my great task master I. ओके, ये 23 एज की अवस्था में इन्होंने लिखा। इन हिज डेकोट्रीन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स एंड टेट्राकॉर्डोन, मिल्टन repudiates marriage. For I thought it best to be traveling at my age for intellectual culture while my fellow countrymen at home were fighting for liberty, who gave the traveling with the plea. Milton. So I just wanted to say, if you want to preparation for TGT and PGT and any exam like literature type से या lecturer sorry, तो you have to subscribe my channel and press the bell icon for more update. And I promise I have to cover all these topics which is very important for the TGT, PGT and all lecturer programs exams. So now we start. In the sonnet, methought I saw my last epoch, Saint Milton celebrate his second wife, who comment on Milton saying this man cuts us all out and Asian too. Dryden. ये किसने कहा, ड्रेडन ने कहा। क्या कहा, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट, मतलब इस व्यक्ति ने हमें काट रखा है सभी तरह से, एंड एशियन टू, एशियन मतलब प्राचीन और प्राचीन भी, ये ड्रेडन। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज जॉयफुल एंड हैप्पी मैन। द
The poem of Milton are joyful, almost Elizabethan in character. Horton poem. Which poem of Milton was joyous, almost Elizabethan in character? Horton poem. From where did इंग्लैंड बोरो द आइडिया ऑफ द मॉस्क्यू? इटली से मॉस्क्यू का आइडिया लिया गया. इटली से कहाँ का आइडिया लिया गया? मॉस्क्यू का. एरोपैगेटिका हाईलाइट्स फ्रीडम ऑफ प्रेस. पैराडाइज लॉस्ट इज इन ब्लैंक वर्स. Who has described Paradise Lost as a dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? Martin. Who is described Paradise Lost as a dream of a Puritan fallen asleep over the Bible? Martin. In Milton life, the period from 1632 to 1637 is popularly known as Horton period. In Milton life, the period from 1632 to 1637 is popularly known as Horton period. Milton has given his view on poetry in his poem Lycidas. The ability of the poem are the inspired gift of God rarely bestowed. Milton. How sweet is divine philosophy, not harsh and crabbed as dull fools suppose, but sweet as is Apollo Lute. Where do these lines appear? In Milton Comus. When Milton wrote on the morning of Christ's nativity, his age was only 21. जब इन्होंने मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी तो ये सिर्फ और सिर्फ 21 साल के थे. एल एलिग्रो, एल पेंसेरो, आर्कडेस, Comus and Lycidas belong to the Horton period. These are the poem which is belonging to the Horton period. Restoration come in 1660. Great plague occurred in 1665. Which poem deals with Satan, temptation of Christ in wilderness, paradise reason? Who described Milton as a modesty-mouthed inventor or harmonious and God-gifted organ voice of England? Tennyson. Bunhill Field is associated with Milton. Milton is said to be the belated Elizabethan. From 20 years of age, I hardly ever left my studies on when went to bed before the midnight. Whose statement is this? Milton. From 1632 to 1638, Milton continues his studies at Horton. Which two poems of Milton are companion poem? El Allegro, El Pensiero. The Defensio was the last work of Milton saw. मतलब अगर पूछा जाए कि मिल्टन ने आखिरी उनका क्रिएशन क्या था, आखिरी प्ले क्या था, तो द डिफेंसियो. In tracing his history of English poetry, Thomas Gray Progress of Prose invoke a major point as follow. ये आपका UGC नेट में भी आया है और RPS PGT में भी आया है. यानी इसकी कुछ लाइन्स हैं, देखते हैं. प्रोग्रेस ऑफ प्रोजी की. Now second he had the root sublime upon the express wings of ecstasy. The secret of the abbey to spy. Who is he? John Milton. The progress of Prose Thomas Gray evokes John Milton. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे. Who among the following was the contemporary or John Milton and wrote the worthy communicant? It is said that the prose can be read easily when Milton must be studied. Jeremy Taylor. ये किसने कहा? Jeremy Taylor में. John Milton, contemporary and author of worthy communicant described above the Jeremy Taylor. The title of El Allegro, El Pensiero are from musicology. The meaning of El Pensiero is thoughtful man. El Allegro, after banishing the spirit of loathed melancholy, because the goddess of mirth Ephorosios
Frone. El Pensero, after banishing deluding joy, welcome the goddess melancholy. In Paradise Lost, book first, Satan is compared to Leviathan. Satan can seduce man, but on himself he will have terrible, confused wrath and vengeance. Who was the next to Satan? Beelzebub. Molech is a horrid king besmeared with blood of human sacrifice, whose would allure the Syrian damsels to lament his face. Thamuez, who was last in line of fallen angel. Baziel, who is associated with the lust and violence. He resigned in the court and place. Who is he? Belial. When right, darken the street, then wander forth the son of Belial, flown from insolence and wine. Where do these lines appear? Paradise Lost. For this internal pit shall never told celestial spirit of bondage. Where do these lines appear? Paradise Lost. Let none admire this riches grow in hell. The soul may best deserve the precious bane. Who is this line appear? Paradise Lost. The opening 16 line of Paradise Lost comprise one statement. 16 line John Milton is comprise one sentence. In Paradise Lost, Milton presents the action of fall of man in two stages of book 4 and 9. Where there is leisure, the fiction, there little grief was Samuel Johnson criticals. Where there is a leisure in a fiction, there is a little grief. The Samuel Johnson criticism of the famous poem. John Milton Lycidas. In Adam and Eve leaves paradise hand in hand with wandering step and slow. Paradise Lost was their conclusion. They are comforted by their foreknowledge of the coming of Christ and Redeemer of mankind. Redeemer मतलब क्या होता है कि किसी के बारे में जानना. In Paradise Lost, which character narrates the story of making of Eve from a rib in Adam's side? Adam himself tells the story of making Eve from his life. Lines 460 से 480 in box 1400. Paradise Lost.